Friends, today we are here and today we are going to, as you have seen, today we are going to talk about like what is computer networks and it's about like final revision and the exams. So that's why we are just having this final revision and as you know, like we have a total 6 module and, uh, and there are many things in that. So let me give you a quick introduction about like what are the things we are going to do and what are the concept like we are going to learn about it. So the very first thing like we are going to do is like about introduction of network as well as we will going to talk in both the part like about like exam point of view as well as like what are the things that you have to do basically right now and in the long run as well. So like the very first module is like introduction to a network and in this like we are going to study about like what is computer network, what is network devices and what are the topologies and like this model is mostly about 6 months like continue. So if you see like we have 80 marks of paper and it is pretty good like you, anybody can score 60 as well like if you are studying this concept as well. So like basically I have to understand about like what is your switching, your packets, your and your network types, LAN, MAN, and WAN. What are the different type of layers as well, like OSI layer and the TCP and IP module? What are the difference between TCP and IP module? Definitely, we are going to see this as well. What is physical and data link layer? We will dive deep into that this as well. What is network layer? Like in this network layer, like there are many. Particularly, we are going to talk about IPv4, IPv6, and there are particularly NAT as well, which is network address translation and definitely about routing and routing protocol and classification, routing algorithm, and part of all this kind of things. So definitely in this next module, like transport layer and application layer, it's all about like transport layer. It's about like it's you can say a core of the OSI module. And the next thing which we are going to see, like in this, like we are going to see about this TCP and or UDP and all this handshake and sliding window protocol and many other things like this model is quite interesting where you can easily able to score 20 marks or like because like there are many questions like about 5 marks so you can able to handle in that as well. So like in HTTP SMTP telnet, what is FTP, what is GHCP, and what is DNS, right? So definitely we're going to take this one by one and we are going to do this. And the next module is about like your enterprise network design, like where yeah, we are. I'm a little bit nervous in this particular part because like we have top-up approach and bottom-down approach and three-layer architecture and core access and this other layer and the Cisco architecture as well, like Cisco Sona architecture, SDN architecture, and so Knox and Box and like those four, like fifth and sixth module, maybe a little bit here and there, but definitely we will definitely going to try all this stuff as well. So the very first thing like we are going to do, like we will see a little bit basic of my, you can say a particular question bank as well. So it's about like particular questions, like you will get a particular idea, like what are the things you are going to do, and mostly it will cover your most of the important topics as well, right? So this is the, as you can see, the notes is down to Sachin. So can say can be the appreciation for that and for Sachin as well. So with my buddy. So the very first thing like we're going to talk about like what is OSI model. Like as you know, like OSI model is in OSI model we have a 7 layers. OSI stands for Open System Interconnection created by International Standard Organization. Let me yeah, and was created was a frame and a framework and a model that explains how different network and technologies are get together and interact. It is not about standing and like you. Let's suppose like I am at a particular stage and I want to send a particular data to someone to my other friend or to my another family members or maybe anyone, right? So what I will do, I will open my. Let's take an example of WhatsApp only, right? So how did your one particular message goes to the another level, right? So there will be some particular connection. So you will find this concept is much more fascinating for me because like it plays a very it gives you a different mindset about like what are the things you are going to do and what are the things you are going to learn. So it's all about like the very first thing is about your physical layer. So let's suppose like I'm giving you example of WhatsApp, right? So in WhatsApp, what happens like I am texting you.
So we are on an application, right? So and the next person texting, he's also on the application part, right? So what actually happens in here in this particular part, what we do, like we particularly accelerate, we particularly do here and there and many other things, right? And presentation layer, like what kind of, like we are talking in English. So in presentation layer, what will happen? The another use and another, like whatever the app we are going to talk about, like in what language you want that particular presentation, right? In session layer, what happens, like it makes a particular session. It gives you a particular time, like whatever the message you are putting, like suppose I'm talking everybody. So on that side, it doesn't get into the shape like buddy hey. Like it should be in a proper same direction or same content, right? So definitely. So and transport layer is something which is the heart of OSI module, और हम यहाँ देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये तीन हमारे सॉफ्टवेयर लेयर है, लाइक एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर एंड नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर आगा hardware, right? And this is the one of you can say part of the OSI module where we actually it connects and many other things it does as well. So definitely, and the network layer में क्या होता है, नेटवर्क लेयर में हम देखते हैं कि लाइक राउटिंग वाला पार्ट आ जाता है, लाइक नेटवर्क, लाइक मैंने अभी मैसेज भेजा तो फिर अभी ये मैसेज कैसा जाएगा, किसके पास जाएगा और कौन से वे में जाएगा, राइट? तो फिर नेटवर्क लेयर मोस्टली यही करता है। तो फिर हम नेटवर्क लेयर पे जब भी वर्क करते हैं तो मोस्टली हम राउटर रहता है एंड राउटर के आगे हम उसको डिटेक्ट करते हैं, राइट? तो फिर वो पर्टिकुलर डेटा कौन सी जगह जा सकता है, राइट? ऑफ डेटा लिंक लेयर के अंदर हम मोस्टली सिक्योरिटी एंड वो सब पर्टिकुलर चीज फाइंड करते हैं एंड डेटा लिंक लेयर इज ऑल अबाउट लाइक सिक्योरिटी, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है। एंड ये मोस्टली हमारा प्रेजेंटेशन लेयर में भी हो जाता है, सेशन लेयर में होता है एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन मेनी अदर स्टफ एज वेल। एंड फिजिकल लेयर में तो हम एक एक करके, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके, and there are much more and few other points are absolutely right there, लाइक कैसे डेटा ट्रांसफर होता है, कैसे डेटा आगे जाता है। तो फिर हम पहले बात करेंगे कि एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन में लाइक मैंने अभी बताया कि लाइक नॉर्मल एप्स वगैरह हो सकता है और आइदर यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर एज वेल, सो यू विल गेट अ particularly good idea as well. And the presentation layer में like we are presenting like in a particular language or in a particular data frame और जो भी अपना other part of view रहता है, तो वो presentation layer हो जाता है। What is session layer में मैंने बताया था कि हम वो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एंड व्हाटएवर द सेशन में भी जो आता है, राइट? सेशन लेयर का या सेशन लेयर इज अ सेशन बिटवीन ऑफरिंग सिंक्रोनाइजिंग एंड रिकवरिंग ऑफ पर्टिकुलर ऑप्शंस, राइट? एंड फिर आता है अपना ट्रांसपोर्ट लेयर इट इज अ वेरी स्पेशल लेयर इन, यहाँ पे क्या होता है जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट्स अ हार्ट ऑफ योर ओएसआई मॉड्यूल। एंड ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, हमें डेटा को सेगमेंट में डिवाइड करता है, राइट? जो भी डेटा आ रहा है तो उसको सेगमेंट में डिवाइड करता है। सेगमेंट में डिवाइड कैसे करता है, और उसके अंदर जो भी है हमारा वो क्या यूज करता है, टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी यूज करते हैं हम क्योंकि वो विद कनेक्शन, जब भी हम अपने डेटा को एक्नॉलेजमेंट वगैरह लेने के लिए रुकता है वो, लाइक टीसीपी एंड यूडीपी ऑल्सो वी डोंट गेट एक्नॉलेजमेंट इन यूडीपी, राइट? तो फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर में ये सब होता है। एंड अपने नेटवर्क लेयर में क्या होता है, तो नेटवर्क लेयर क्या करता है, सेंडर और रिसीवर वो दोनों का आईपी एड्रेस रखता है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम मोस्टली अपना राउटर एज वेल एज लाइक, राउटर क्या करता है, वही करता है ना कि एक पर्टिकुलर फाइंड और हार्टबीट ढूंढता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो कैसे हो रहा है, क्या कि नेटवर्क कैसे जा रहा है, अपना वो सब्सटेंस कैसे जा रहा है, या फिर जो भी पैकेट्स वगैरह है वो कैसे जा रहा है। तो अब भी हमारा डेटा सेगमेंट के फॉर्म में डिवाइड हो चुका है। अब भी नेटवर्क लेयर में क्या होगा, जो हमारा डेटा था वो फ्रेम के फॉर्म में आएगा, राइट? फ्रेम नहीं, पैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक इनटू अ स्मॉल पैकेट के फॉर्म। लाइक जो भी सेगमेंट था, इस सेगमेंट और डिवाइड हो रहा है, वो किस में आ रहा है, पैकेट के फॉर्म में आ रहा है। पैकेट के फॉर्म में आ रहा है, लाइक राउटिंग और फिर लाइक वो सब हम यहाँ यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग अपना आता है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, वेरी फर्स्ट है ना, परफॉर्मेंस होता है, वहां पे अपन एरर चेक करते हैं, मैनेज डेटा फ्लो करते हैं। एंड वो डेटा अभी जो हमारा डेटा पैकेट के फॉर्म में वो किस में कन्वर्ट होगा, फ्रेम में कन्वर्ट होगा। जैसे फ्रेम में कन्वर्ट होगा फिर क्या आएगा, फिजिकल लेयर में आ जाएंगे। फिजिकल लेयर में क्या होता है, मोस्टली डेटा को अपन बिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, लाइक 0 एंड 1, और फिर like उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है वो। तो बेसिकली इतना भी लिख देंगे तो फिर अपन दैट इज मोर देन इनफ, राइट? यहाँ पे लिखा है प्रेजेंटेशन लेयर में हम क्या करते हैं, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एंड सिंक्रोनाइजेशन एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग।
So right. So next thing like we are going to talk about like the difference between OSI module and TCP module. तो OSI module हमें पता है कि उसके अंदर it stands for open system interconnection, and TCP stands for transmission control protocol and IP protocol as well. And जो अपना OSI मॉड्यूल होता है उसके अंदर 7 लेयर्स होते हैं, एंड जो अपना TCP मॉड्यूल होता है उसके अंदर 4 लेयर्स होते हैं. इट इज लो इन यूसेज. अपन बहुत जगह ओएसआई मॉड्यूल का यूज नहीं करते. अपन बहुत जगह क्या यूज कर सकते हैं अपना आईपी, क्योंकि मोस्ट ऑफ अपने नेटवर्क में अपन देखेंगे हर एक लेयर में टीसीपी एंड आईपी यूज हो रहा है, तो उसका बहुत ज्यादा यूज होता है. इट्स अ वर्टिकल अप्रोच, एंड अपना टीसीपी एंड आईपी क्या है, हॉरिजॉन्टल अप्रोच, राइट. हम देख सकते हैं, पता है सबको, पता है ये तो बेसिक है. और जो भी यहाँ पे वर्टिकल हो गया एंड डिलीवर राइट, डिलीवर ऑफ अ पैकेट इज गारंटेड. लाइक जो भी मैंने तुझे मैसेज भेजा है वो पता चल जाएगा कि मुझे मैसेज गया है, राइट. जो भी हम व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं डबल टिक आता है, वी नो लाइक मैसेज चला गया. एंड इसमें डिलीवरी ऑफ मैसेज और पैकेट गारंटीड नहीं रहता, क्योंकि मैंने तो जो भेजा हाय हेलो चला जाएगा, राइट. तो मे बी लाइक ये क्या करता है, लाइक अपना जो टीसीपी आईपी में लिटिल बिट हियर एंड देयर, बट इट्स मच मोर फास्टर, राइट. सो उसमें अपन इतना रिलाय नहीं कर सकते. लेस रिलायबल देन टीसीपी एंड आईपी, इट इज मोर रिलायबल देन ओएसआई मॉड्यूल, राइट. अपना टीसीपी आईपी थोड़ा सा ज्यादा ओएसआई मॉड्यूल से ज्यादा. तो रिप्लेसमेंट ऑफ अ टूल्स एंड चेंजेस कैन बी डन इन अ मॉड्यूल. रिप्लेसमेंट ऑफ अ टूल इज नॉट इजीली अपना टीसीपी एंड आईपी वाले मॉड्यूल में. तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज अपन देखेंगे व्हाट आर द टोपोलॉजी एंड इट्स टाइप, एंड ये भी अगर आ जाएगा तो 10 मार्क के लिए आ जाएगा, तो फिर वहाँ पे अपने में लिखना पड़ेगा ना, अपन जबरदस्त लिखने वाले, राइट. तो पहले डिफाइन करेंगे व्हाट इज टोपोलॉजी. टोपोलॉजी क्या होता है कि टोपोलॉजी ये होता है कि अरेंजमेंट ऑफ अ कंप्यूटर और अरेंजमेंट ऑफ अ नोड इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट. इट इज नोन एज, ओके लेट्स सी, इट्स अलार्म, राइट. Now let's go then once again. And yeah, we were talking about like topology is defined as a logical arrangement of a particular node. The word physical network topology used in many other stages as well. So device or node in a network connected to each other by communication करना होता है हमें most of the time, like topology की करते हैं हम दो कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेट करना होता है. तो डिफरेंट वेज में हम कंप्यूटर को लगाते हैं, तो वही हमारा टोपोलॉजी है, राइट. तो और फिर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एंड सच एज रिलेशनशिप of a link and nodes is also known as a topology of a network. So there are different type of topology. The very first one was a mesh topology, like the अगर हम लिखते हैं bus topology आता है, ring topology आता है, star topology आता है, and the mesh topology आता है, and the bus topology आता है, right. And ये सब चीज हम डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर. So what was that? Right, we are here, and we will see what are the different type of topology. एंड सो ये वी आर. एंड हमें पता है कि बस होता है, रिंग होता है, ट्री होता है, स्टार होता है, मैश होता है, हाइब्रिड होता है. तो हम ये देखेंगे कि ये है हमारा वेरी सबसे पहला आता है बस टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी क्या करता है, एक पर्टिकुलर ये जो भी हमारा ये एक पर्टिकुलर लाइन से सारे नेटवर्क या सारे नोड कनेक्टेड होते हैं. नेटवर्क को बैक नोड भी बैक बोन भी बोलते हैं. सो बस टोपोलॉजी इज डिजाइन इन सच अ वे दैट all the stations भी बोलते हैं, नोड भी बोलते हैं, एंड उसको many different types को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट. इट इज अ single cable knowledge of a backbone cable. Each node is either connected in a backbone cable or a drop cable. तो फिर हर एक केबल बैकबोन केबल से कनेक्टेड होता है, जो हमारा मेन वो होता है. when a node wants to send a message over a network, it puts a message over a network and all the stations are available. तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं कि हम अगर एक मैसेज हमें एक कंप्यूटर को भेजना होगा तो सारे कंप्यूटर को चला जाएगा, राइट. it will receive a message where it has been addressing or not, right. So the bus topology is mainly used at 802. Ethernet and 802.4 standard network, right. The configuration of a bus topology is quite
सिंपलर एंड कंपेयर टू दी अदर टोपोलॉजी बहुत ईजी होता है कि हम इजीली सेटअप भी कर सकते हैं, सिंगल लेन होता है। और फिर द मोस्ट कॉमनली एक्सेस मेथड ऑफ अ बस टोपोलॉजी इज CSMA कैरीज मल्टीपल एक्सेस। तो यहाँ पे क्या होता है, लाइक CSMA क्या होता है, लाइक CSMA ये एक पर्टिकुलर पार्ट आता है आगे। तो CSMA इट इज अ मीडिया एक्सेस कंट्रोल यूजिंग अ कंट्रोलर एंड अ डेटा फ्लो so that data integrity is maintained, that is packets do not get lost। हमारा जो भी पैकेट होता है, जो भी हमारा डेटा आता है वो लॉस्ट नहीं होता। देयरफॉर टू अल्टरनेटिव वेज ऑफ हैंडलिंग द प्रॉब्लम। तो सीएसए में क्या करता है कि लाइक वो जो भी हमारा पैकेट कोलिजन होने नहीं देता है, या फिर कुछ अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो वो सब होने नहीं देता है, राइट। सीएसएम में सीएसएम में यहाँ पे कोलिजन डिटेक्शन होता है, एक कोलिजन अवॉइडेंस होता है। तो कोलिजन डिटेक्शन कैसे होता है, तो फिर मैं बताता हूँ कि द वेरी फर्स्ट स्टेप इन एक्सेस मेथड यूजिंग टू डिटेक्ट अ कोलिजन। उसको पता चलता है कोलिजन, वंस द कोलिजन इज डिटेक्टेड द सेंटर विल स्टॉप ट्रांसमिटिंग द डेटा। उसको जैसे ही उसको पता चला कोलिजन डिटेक्ट हो गया, लाइक होने वाला है या फिर हो चुका है, जो भी सेंडर रहेगा वो स्टॉप कर देगा अपना जो भी मैसेज वगैरह भेज रहा है, जो भी अपना पैकेट्स वगैरह भेज रहा है, जो भी भेज रहा है, राइट। रिकवर आफ्टर, देयरफॉर इट वर्क्स ऑन रिकवरी आफ्टर द कोलिजन, राइट। तो हम उसको पता कब चलता है, जब कोलिजन हो जाता है। और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें कोलिजन अवॉइडेंस करना, जब हम बात कर रहे हैं लाइक दो लोग, तो कोलिजन लाइक दो लोगों की बातें ओवरलैप नहीं होनी चाहिए ना। तो उसको अवॉइड कैसे करेंगे हम, तो इट इज एन एक्सेस मेथड used to avoid a collision by checking whether the transmission median is busy or not, right। तो हम चेक करते हैं कि भाई ये जो भी हमारा लेन है, यहाँ पे कोई गाड़ी चल रही है कि नहीं। तो गाड़ी चल रही होगी तो मैं रुक जाऊंगा भाई, क्योंकि मैं स्पीड में जाने वाला हूँ ना। तो if busy then sender will wait and until the medium became idle, right। तो कोई भी रोड एकदम खाली हो जाएगा, रोड जब तक खाली नहीं होगा मैं क्यों निकलूँ भाई, 100 की स्पीड में जाना है देखो। तो फिर आइडियल होने तक का वेट करता है, जैसे उसको पता चलेगा आइडियल हो गया। दिस टेक्निक effectively reduce the possibility of a collision, it does not work on a recovery after the collision। So right, so what are the advantages of burst topology, like वो low cost है, moderate data speed है, like ज्यादा ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो, familiar technology से लिमिटेड फेलियर, उसके ज्यादा फेलियर होने के चांसेस नहीं है। और फिर डिसएडवांटेजेस क्या है, वो मैं आपको पता है कि लाइक ट्रबल शूटिंग हो सकता है, डिफिकल्ट इन ट्रबल शूटिंग, सिंगल लाइक फटाक से हो जाता है वो। एक सेकंड, दो सेकंड। इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज इन द सेंस केबल हो गया, हमारा ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि वो सब कुछ हमें थोड़ा सा यूज करना होता है। नो लॉन्ग रन इट डजंट मैटर, बट मैटर करता है, राइट। अगर हम यहाँ देखेंगे तो एंड नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं यहाँ पे, नहीं ये सब तो इजी है। तो फिर हम आप एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांटेजेस में क्या लिखेंगे, बहुत इजी है, इजीली मेंटेन कर सकते हैं, और फिर जो भी डेटा है फटाक से ट्रांसफर हो सकता है, मॉडरेट स्पीड है एंड नथिंग एल्स, राइट। एंड व्हाट इज रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एक बहुत ही स्पेशल टाइप का कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे एक नोड, एक computer are connected with the two another node, right। so ring topology is like a burst topology, but it is connected, but with the connected ends, right। उसके दो connected ends, and वो endless कैसे, क्योंकि वो पूरा गोल है ना, तो सर्कल never has the end, right। when computer wise देखेंगे तो है, it has it। the node that receive the message from a previous computer will read that, अब मतलब जो नोड मैसेज उसको दूसरे कंप्यूटर से मिल रहा है वही सेम वो आगे कर देगा, राइट, नेक्स्ट नोड को देगा। द डेटा फ्लो इज वन डायरेक्शनल, आइदर यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से घूम रहा है, राइट, अगर ये कंप्यूटर से, अगर ये कंप्यूटर लाइक सेंटर वाले कंप्यूटर से घूम के उसको ये वाले कंप्यूटर पे आना, लाइक इट्स मे बी क्लॉकवाइज भी जा सकता है, एंटी क्लॉकवाइज जा सकता है, तो हम असाइन करते हैं उसे, तो यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। लाइक डेटा फ्लोज इन अ सिंगल लूप कंटिन्यूअसली, नो has a endless loop, right? Endless loop volume में आपको बताया है अभी। If it has a terminated end, each node is connected to other node and having no terminology and point वगैरह। तो फिर हम data in a ring topology flows in a clockwise direction and it can also assign और manipulate करेंगे हम, तो maybe working of token
पासिंग। तो फिर एक टोकन वो पता है ना कि कैसे होता है। मैंने मैसेज दिया कि मेरे फ्रेंड को मैसेज पहुँचाओ, तो बट मेरे यहाँ से 2 फ्रेंड और वो मैसेज पहुँचाएँगे दूसरे वाले तक। तो वहाँ पे क्या आएगा, कनेक्शन होगा, राइट? तो एक यूनिडायरेक्शन में वो जा रहा है, जैसे भी गेम होता है लाइक अपन हाथ पकड़ के वो कनेक्शन बेचते हैं, राइट? तो फिर उसमें भी यही होता है कि लाइक किसी को पता नहीं चलना चाहिए वो कनेक्शन जा रहा है। बट अगर बीच में तेरा कोई भी डिवाइस खराब हो, तो वो एंड यूज़र को नहीं पहुँचेगा, राइट? तो वही चीज़ हम यहाँ देखते हैं, एडवांटेजेस में क्या होता है, नेटवर्क मैनेजमेंट, तो फिर प्रोडक्ट एबिलिटी, कॉस्ट इजीली अवेलेबल होता है, उसके कंपोनेंट्स एंड वो सब हमें मिल जाता है वेरी कॉस्ट में हम। और रिलायबल भी है, इट इज़ मोर रिलायबल नेटवर्क बिकॉज़ कम्युनिकेशन system is not dependent on a single host computer, right? तो इसलिए हम reliable है। And disadvantages क्या है? Difficult troubleshooting, it requires specialized test equipment to determine a cable fault। अगर खराब हो गया तो फिर कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा वो खराब हुआ, राइट? तो फिर failure, the breakdown of a one station leads to the failure of overall network हो जाता है हमारा। to delay communication delay is directly proportional to the number of nodes। like अगर ज़्यादा नोड होगा तो मे बी आपको फिर वो जो मैसेज देगा वो थोड़ा सा लेट मिलेगा, राइट? एंड फिर ये सब आ जाता है। फिर ना स्टार टोपोलॉजी इज वन ऑफ best and special you can say, and now you will know why it is so special। All the host in star topology are connected in a central device which is known as hub भी ले सकते हैं हम, और switches भी ले सकते हैं by using a end to end point connection, right? ये hub है, like यहाँ पे हमने hub लिया, but the most of the time हम switch भी ले सकते हैं, right? So free star topology is an arrangement of a network in which every node is connected to a central hub switch or a central computer network, right? तो हब हमें पता है कि उसके अंदर मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, वो मल्टीपल पोर्ट्स में हमारा कंप्यूटर कनेक्ट रहता है, राइट? तो फिर सेंट्रल कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज अ सर्वर एंड अ पर्टिकुलर डिवाइसेस एंड अटैच अ क्लाइंट वगैरह, सर्वर एंड क्लाइंट वगैरह के बीच में हम वो भी जो भी करते हैं हम ट्रांजैक्शन वगैरह वगैरह, तो वो सब चलता है। तो हमें बस इतना सा आना डिफाइन करना व्हाट इज स्टार टोपोलॉजी एंड क्या करता है स्टार टोपोलॉजी। लाइक हब एंड स्विचेस आर मेनली यूज्ड फॉर कनेक्टिंग अ फिजिकल स्टार, लाइक स्टार जैसे उसका नेटवर्क रहता है। So next thing, like what are the advantages of star topology? Efficient troubleshooting, like troubleshooting is quite efficient in a star topology as compared to the bus and अपना circle topology। तो था in a bus topology like we have to inspect and like बहुत kilometers of cable वगैरह लगता है। तो in star topology all the stations have to connected to a centralized network, therefore the network administrator has to go to a single station in troubleshooting problem। So network control, like complex network control features can be easily implemented in the star topology। Any changes made in the star topology are automatically accumulated। Limited failure, फेलियर होने का चांसेस नहीं है। फेलियर कब होगा? जब हमारा हब या स्विच खराब हो जाएगा। अगर नोड खराब रहेगा तो नो मैटर, तेरा अपना नेटवर्क फिर भी चल रहा है, राइट? इजीली एक्सपांडेबल, लाइक अब अगर मुझे नया कंप्यूटर लगाना है तो डेफिनेटली मैं लाऊंगा और लगा दूंगा। और इससे क्या होता है, हमारा स्विच जो है वो स्पीड बहुत ज़्यादा देता है, हाई डेटा स्पीड, इट सपोर्ट्स बैंडविड्थ एंड अप्रॉक्सीमेट 100 Mbps, ईथरनेट 100 based on the most popular star topologies network। Disadvantages of वही मैंने बोला केबल, right? Sometimes cable routing is more difficult and a significant amount of routing required as well। Central point of failure switches अगर खराब हो गया तो गेम हो जाएगा अपना, right? तो ट्री टोपोलॉजी हमें पता है like it's a tree like structure and a combination of a characteristic of a bus topology and star topology का थोड़ा सा characteristic रखता है अपने पास। behavior like ऐसा थोड़ा सा act भी करता है। Tree topology is a type of a structure in which all the computers are connected with each other in hierarchical fashion। Topmost node in a tree topology is also known as a root node and all other nodes are in like उसके अपन child node बोल सकते हैं, right? तो फिर वो हो जाएगा and top node, right? And what is there are only one path existing between a two nodes of transmission, thus forms a particular parent and child hierarchy। एडवांटेजेस क्या है? इजीली एक्सपांडेबल है, इजीली मैनेजेबल, एरर डिटेक्शन इजीली हो जाता है अपना, एंड सपोर्ट फॉर ब्रॉडन ट्रांसमिशन लाइक
Tree topology is mainly used for broad transmission signals sent over long distance as well, and error detection and limited failures without any breakdowns of a one station does not affect the entire network. Point to point राइटिंग अगर मैंने यहाँ से तुझे भेजा है तो वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ही मिलेगा, राइट? मैंने यहाँ से भेजा, मैंने अपने फ्रेंड को भेजा तो मेरे वही फ्रेंड को जाएगा और टू कंप्यूटर में नहीं जाएगा। अब ये करता है स्टार अपना, right? Okay, we'll come on it definitely. So, disadvantages of a tree topology: difficult troubleshooting. It is difficult to occur in our node. Then it becomes a difficult to troubleshoot the volume higher founded by failure. The tree topology mainly rely on many buses cable, and the failure in only bus cable will damage the all over network को हो जाएगा। and mass topology is like a star set structure रहता है, उसमें हर एक कंप्यूटर हर एक पर्टिकुलर नोड से कनेक्ट रहता है। तो ये mass topology is arrangement of a network in which a computer are interconnected with each other throughout the various connection, right? There are multiple paths from one computer to another computer. मल्टीपल पाथ होता है, जब मुझे एक कंप्यूटर का मैं ये वाला डिस्टेंस में ज़्यादा लगा तो मैं ये वाले डिस्टेंस से चला जाऊंगा, राइट? तो मेरे कॉलेज जाने का रास्ता, राइट? यू कैन अज्यूम लाइक दैट वे एज वेल। एंड हम यहाँ देखते हैं there are multi path from one computer to another computer and it does not contain a switches hub or any other kind of thing। ये हम डाल देंगे ऐसे लिख देंगे। The internet is an example of a match topology। It will be like बहुत सारे computers are connected to one another, right? Match topology is mainly used for a wide area network which is implemented where a communication failure and critical. Match topology is mainly used in wireless network, right? Definitely. Match topology can be used whatever numbers of node that we can able to do that, right? In match topology is divided into two categories: full match topology, partial match topology। फुल मैच टोपोलॉजी में क्या होता है? फुल मैच टोपोलॉजी each computer is connected to all the computer available in the network and partial में वो सारे से कनेक्ट नहीं होता है। इनमें partial match topology not all but a certain computer are connected to those computer which are communicating frequently, right? तो frequently computer से वो connect होता है। एडवांटेजेस ऑफ मैच टोपोलॉजी: रिलायबल है, काफी रिलायबल है, बहुत ज्यादा फास्ट कम्युनिकेशन करता है इजीली अपने को। Adding a new device would not disturb the communication between the other device as well। Disadvantages: कॉस्ट है, मैनेज करने के लिए थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है, लाइक एंड मेंटेनेंस भी थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है। एंड एफिशिएंसी containing a higher reduction efficiency in the network। What is hybrid topology? Hybrid topology is a combination of, you can say, star and ring bus topology bro। So the combination of a various different topologies has a hybrid topology। Hybrid topology is a connection between a different links and nodes to transfer the data. When two or more different topologies are combined together, that has a hybrid topology. And similarly, there are the connections in which we will be able to result hybrid topology। For example, if there is a ring and ठीक है ICIC बैंक है, बस टोपोलॉजी कनेक्ट करना है ICIC बैंक से तो फिर वो कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी: रिलायबल है, स्केलेबल है, फ्लेक्सिबल है, effective है, right? तो रिलायबल क्यों है? Fault occurring any part of a network will not affect the function of the rest of the network। Scalable, easily network flexible, QA topology is very flexible। It can be designed according to the requirement of organization के थ्रू हम कर सकते हैं, इसलिए वो flexible है, effective है। Hybrid topology has a different kind of thing as well। And disadvantages: complex design, costly, हाँ बहुत switches बहुत महंगे होते हैं। जहाँ पर भी switches and hub use हुए तो हम डायरेक्ट से costly बोल देंगे, right? Costly infrastructure as well। So definitely we'll come back on that particular stuff which we were in right now. Yeah, we were talking about all this kind of stuff. So what are the types of network, right? So this is one of the beautiful part where what we are going to study about what is LAN, MAN, and that. So it is very beautiful thing.
So LAN is basically about local area network. Local area network is a network which is designed to operate over a small physical, like हम ना LAN छोटे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं या फिर एक पर्टिकुलर स्कूल के लिए यूज कर सकते हैं या फिर एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं, राइट? LAN it's a local area network. It is widely used for application. The personal computer and a workstation are interconnected in office, while LAN uh, the exchange of information and sharing the resources become easily in the LAN as well. For LAN, different type of topologies are used, such as bus ring, star tree, and etc. LAN usually uh, particular phone and link to a device in a single office, building and computer and all other stuff. What is man? It is metropolitan politician area network. Man is a basically bigger version of a land and normally using a similar technology where it is designed to extend over a large area such as entire city and Bangalore and Mumbai से connect करना है तो फिर हम कर सकते हैं by using man as well, like it's a combination of a multiple land. Man may be whole owned and operated by private computer companies and many other services in the public companies as well. What is WAN? WAN is a wide area network. Is, for example, www.google.com. We have it is very much wide and it can be very much accessible. So for such a situation, why do the network must be installed? The internet to be WAN about the communication between different the user in WAN was established using a telephone, cloud, satellites, links, and other things being included हो जाते हैं. And it's cheaper and more efficient through the phone's network and links, right? So यहाँ पे हम देखते हैं what are the communication medium between, तो यहाँ पे हमारा दो communication medium होता है, एक guided होता है, एक हमारा unguided होता है. इसी को हम वायर मीडियम बोलते हैं और अनवायर मीडियम बोलते हैं. तो वायर मीडियम में क्या होता है, हम लोग को एक कनेक्शन पहले तो लगाना पड़ता है या बनाना पड़ता है कनेक्शन, राइट? एंड अनगाइडेड मीडियम कनेक्शन बनाना नहीं पड़ता है. और जो हमारा वायर मीडियम है तो उसमें क्या होगा, आपको पता रहेगा कि कनेक्शन कितना जल्दी हो सकता है, राइट? अगर मैं यहाँ से कुछ बोल रहा हूँ आपको एक स्ट्रिंग के थ्रू या फिर समथिंग, तो आपको बहुत जल्दी सुनाई देगा. मे बी या राइट, अगर कनेक्शन आपको पता है, मैं अगर यूएसबी मेरे कंप्यूटर में लगा यूएसबी में से इथरनेट लगाया तो वो बहुत फास्ट होगा एंड rather than वाईफाई जितना फास्ट नहीं चल पाएगा, राइट? वाईफाई ले लेते हैं एग्जांपल, अगर अनवायर्ड रहेगा तो. और क्या हो सकता है वायर्ड में, हम डायरेक्शन शो करते हैं नेटवर्क किधर जाना है आपको. एंड अनवायर्ड में क्या होता है कि हम डायरेक्शन नहीं, वो ओपनली रहता है एंड फिर वहां से कैच करना पड़ता है तो उसका फ्रीक्वेंसी वगैरह कम हो सकता है, राइट? एंड इसके अंदर स्पीड ज़्यादा मिलता है, उसमें फ्रीक्वेंसी वगैरह वही कम होता है. एंड और क्या है, चलो देख लेते हैं थोड़ा सा गाइडेड एंड अनगाइडेड. एंड उतना ही है, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम वायर मीडियम में हम वायर्स वगैरह यूज कर सकते हैं, उसमें कोएक्सियल केबल, इसमें भी कोएक्सियल केबल्स हैं वो सब यूज कर सकते हैं. एंड अनवायर्ड मीडियम में क्या होता है, हमारा इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव एंड ये सब काइंड ऑफ थ्रू से हम कम्युनिकेशन करते हैं, राइट? सो अब हम देखते हैं व्हाट आर द सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग, राइट? सो सर्किट स्विचिंग में हम क्या करते हैं, टेलीफोन नेटवर्क फॉर बाय डायरेक्शनल एंड रियल टाइम ट्रांसफर ऑफ अ वॉइस सिग्नल. तो सर्किट स्विचिंग में हम देखते हैं कि हमारा बाय डायरेक्शनल डेटा फ्लो होता है. पैकेट स्विचिंग में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि डेटा जो भी हमारा स्ट्रीमिंग सर्विस बिटवीन द कंप्यूटर. और हमारा सर्किट स्विचिंग टेलीफोन मॉडेम एंड पैकेट स्विचिंग फॉर कंप्यूटर एंड टर्मिनल. Information type analog voice or PCM digital voice, binary information, and the transmission system analog and the digital data over a difficult transmission and all this kind of thing as well. और हम देखते हैं ये hierarchical numbering plan और इसमें hierarchical addressing space होता है.
routing schema, router selects during a cell setup. Each packet routing is independent. इसके अंदर होता है, right? And let's bring the several repeated requests. ARQ selected repeat automatic repeat request like ARQ. ARQ होता है, right? Select repeated ARQ is a specific type of automatic repeat request protocol used in data communication and network to ensure the reliable de- deliver of a data packet. It is often employed in situations where data transmission and error are possible, such as in wireless medium or the over unreliable like channel वगैरह में हम ये यूज कर सकते हैं. तो फिर ARQ लाइक अगर मुझे इस पर्टिकुलर मैसेज को बार बार ये करना है तो फिर हम ये करते हैं. नेक्स्ट थिंग क्या आता है, नेक्स्ट थिंग आता है हमारा पैकेट पैकेट ट्रांसमिशन एंड पैकेट नंबरिंग. फिर रिसीविंग बफर. पहले पैकेट ट्रांसमिशन होता है. पैकेट ट्रांसमिशन में क्या होता है, सिलेक्टेड रिपीटेड ARQ डेटा इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर को भेजते हैं हम. पैकेट ट्रांसमिशन, पैकेट को नंबरिंग करते. ईच पैकेट सेंड बाय द सेंडर इज असाइन अ यूनिक सीक्वेंशियल नंबर. रिसीवर बफर तो फिर रिसीविंग maintain a buffer to store a receiving packet temporary data को store भी करता है. Acknowledgement and NAG. When a receiver successfully receive a packet, it sends the acknowledgement back to the sender, indicate that the packet was received correctly, right? We send a behavior upon receiving is acknowledgement. The sender knows that the corresponding package was received correctly, so it can remove the packet from the buffer, right? And receiving buffer, when the receiver receive a packet out of order or detect error in the packet, it stores the packet in the buffer but does not deliver to the higher layer protocol. Once mission is or packet are transmitted and received correctly, the receiver delivers all the packet and higher level protocol to the correct order. में कर देते हैं, right? तो फिर लास्ट में हमारा selected repeated ARQ is an effective method for achieving valuable data transmission in scenario the packets loss or error are common. It strikes the balance between efficiency and reliability by retransmitting only unnecessary packets while allowing a parallel processing network, right? We हम यहाँ पे देखते हैं next thing what is go back and ARQ. Go back and ARQ, right? Automatic repeat request. So yeah, let's go back and ARQ from automatic repeated request. It is an error control protocol as above using a data communication and networking to ensure that the reliable deliver of data packets over unreliable channel, right? तो हम ना क्या करते हैं, deliver reliable deliver of data packets over an unreliable channel. It is a specific type of automated repeated ARQ protocol. Here's how go back and ARQ works. तो पहले क्या करते हैं, हम पैकेट को ट्रांसमिट करते हैं. डेटा इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. पैकेट के फॉर्म में जाएगा. पैकेट नंबरिंग होता है. फिर ईच पैकेट सेंड बाय सेंडर इज असाइन यूनिक नंबर, सीक्वेंशियल नंबर होता है.
तो फिर क्योंकि अगर ये भी सीक्वेंस नंबर में जा रहा है, अगर मैंने यहाँ पे भेजा 896, तो अगर वहाँ पे रिसीवर को 896 नहीं मिला, लाइक 8 और 9 मिला भाई, तो वी विल एबल टू डिटेक्ट लाइक ये 6 कहाँ चला गया बाबा, राइट? वो मेरे सर्वर के पास होता है उसका वो sender behavior, sender maintain a sender video, maintains a sender window, sender packets with the next available sequence numbering, keeps a copy of a sending packet until the receiving, so जब तक acknowledgement नहीं मिल जाता तब तक वो रखता है अपने पास। रिसीवर बिहेवियर में वही हो जाएगा, उसको वो मिल जाएगा सीक्वेंशियल नंबर ऑफ विंडो, देन वो एक्नॉलेजमेंट भेज देगा इन ऑर्डर ऑफ पैकेट, लाइक फिर डिस्कार्ड आउट ऑफ द पर्टिकुलर वो बाहर चला जाएगा। तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? गो बैक एनआरक्यू डजंट यूज एनी KS, receiving only send positive acknowledgement and correctly receiving packets. Sender retransmission. तो sender टाइम टाइमर एक्सपो और क्या है इससे निकलता if a sender return to expire before उसका जो भी एक्सपायर हो जाएगा विदाउट एक्नॉलेजमेंट कंज्यूम पैकेट लॉस, तो फिर वो जैसे पैकेट उसको मालूम पड़ेगा लॉस हो गया तो फिर वो क्या करेगा? वापस से भेज देगा अगला अगला अननोन पैकेट अंदर हिंदी। तो बैक एन आर क्यू पर्टिकुलर एक फ्रेम में हम बहुत सारे विंडोज एंड बहुत सारे पैकेट्स वगैरह बेच सकते हो, लाइक इट इज अ लैब एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग हैपेंस। व्हाट इज अ प्योर एलोवा एंड सॉलिड एलोवा? सो प्योर एलोवा, it works on a very simple principle, as essentially it allows for any स्टेशन और ब्रॉडकास्ट एट एनी टाइम, लाइक हम कोई भी टाइम पे यहाँ पे अपना मैसेज भेज सकते हैं, अपना पैकेट भेज सकते हैं, या फिर अपना क्या लेटर भेज सकते हैं। इफ टू सिग्नल्स कोलाइड, ईच स्टेशन सिंपली वेट्स एंड रैंडम टाइम एंड ट्राई अगेन, राइट? अगर दो मैसेज कोलाइड हो रहे तो वो स्टेशन क्या करेगा? रुक जाएगा पर्टिकुलर टाइम के लिए रैंडम, एंड देन फिर अपना मैसेज छोड़ देगा, तो फिर वहां से वो कोलाइड होने के चांसेस कम रहते हैं इसमें। कोलिजन आर इजीली डिटेक्टेड एज शोन इन द फिगर बिलो। तो फिर ये हम बना लेंगे एक पर्टिकुलर सेंट्रल स्टेशन बनाएंगे एंड बहुत सारे अलग अलग स्टेशन बनाएंगे कि वहाँ पे हमें पता चलेगा नाउ कमाल बड़ी कमाल ये we are going to begin again about let me just put my charger and just so we can start again. Come on, my buddy, come on. If not you, then who? If not now, then when? Your time, it's your time. Come on, let's go. सो इन प्योर लोग अभी मैंने बताया आपको कि क्या क्या होता है यहाँ पे। हमारा जो भी डेटा रहता है वो रैंडम टाइम पे जाता है, ब्रॉडकास्ट होता है। इफ एनी टू सिग्नल्स आर कोलाइड, तो फिर वो क्या करेगा? जो भी स्टेशन रहेगा वो वेट, वो रुक जाएगा कि भाई मैं अभी मैसेज नहीं भेज रहा, तो एक पर्टिकुलर रैंडम टाइम के लिए रुकेगा फिर अपना भेज देगा। कोलिजन आर इजीली डिटेक्टेड एज शोन इन द फिगर बिलो। व्हेन अ सेंट्रल स्टेशन रिसीव और फ्रेम, इट सेंड्स एन एक्नॉलेजमेंट टू अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में वो अपना वो भेजता है। तो ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टेशन, तो मैं जो भेज रहा हूँ लाइक समझिए सेंट्रल हब है, तो सेंट्रल हब इन सेंट्रल स्टेशन है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? कोई एक ही बंदा वो फ्रीक्वेंसी लाइक ट्रांसमिट होती है, राइट? सो इट इज यूज्ड इन द स्टेशन। So if a user station receives an acknowledgement, it assumes that the transmission frame was successfully received, and if does not get any acknowledgement, it assumes that collision has occurred and it's ready to retransmit that same message. But the advantages of pure audio,
is the simplicity in our implementation, but its performance becomes worse now the data traffic and channel increase, right? Slotted alone में क्या होगा slot होगा अपने पास to overcome a disadvantages of where lower of a low capacity. Here we are coming up with a slotted lower, right? Robust published a method for duplicating the capacity of traffic on the channel. In this method, it was proposed that the time be divided into a particular segment. तो फिर इसमें ना सर टाइमिंग होगा कि लाइक 1 बजे डोर ओपन होगा, कितने भी मेल जाएंगे वो जाएंगे, 2 बजे वापस से ओपन होगा, कितने भी मेल जाएंगे जाएंगे, राइट? तो यहाँ पे हमने एक स्लॉट में उसको बांट दिया. दिस मेथड इट वाज proposed that the time has been divided into discrete interval and each interval corresponding to one frame, right? So in this method for achieving synchronization, one special station enters in a pipe and stores the each individual like clock or method वगैरह टाइम वगैरह हमने जो बताया, लेकिन बेसिकली अपन फिर उससे एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें इतना इशू नहीं आना चाहिए आपको. एंड यहाँ पे हम बात करते हैं प्योर स्टॉक मिडल वगैरह जो कि CSM है. एंड जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि किसे फर्स्ट टोपोलॉजी में बात कर रहे थे कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, राइट? सो CSM is the carrier sends multiple access with a collision detection on CSMA and CSA, right? So यहाँ पे हम दो टाइप होता है, लाइक एक हम collision को डिटेक्ट करते हैं, जहाँ पे collision को अवॉइड करते हैं, राइट? तो फिर व्हाट इज CSMA, तो फिर उसमें यहाँ पे carrier sends a multiple access is a network protocol that allows multiple devices to share a common communication channel before transmission. Data device use CSMA list to the channel to detect if it is ideal or not, right? अगर वो ideal रहेगा, no other devices is currently transmitting. If the channel is busy, the device waits for a random back off period of before attempting to transmit. CSMA is commonly used for Ethernet, LANs, and where other collision can occur. एंड CSMA का भी अपन कोलिजन डिटेक्शन कर रहे हैं, लाइक एक अवॉइडेंस होता है CS को जब हम जहाँ पे कोलिजन को अवॉइड करते हैं. लाइक पहले तो हमने डिफाइन किया कि लाइक CSMA क्या होता है कि वो चेक करता है कि मेरा ये जो रास्ता है वो आइडियल है कि नहीं, राइट? अगर नहीं रहेगा तो रुक देगा, होगा तो रुक जाएगा. तो और फिर आता है हमारा collision detection. CSMA is an extension of Ethernet network. In addition to listing for an ideal channel before transmitting, device use CSMA/CD also continues to monitoring the channels while transmitting data, right? जब डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो ये collision detection वाला देख रहा है. If a collision is detected, both device stop transmitting and and down and enter a collision recover phase. तो जब तक इसे पता चला भाई हाँ कोलाइड हो रहा है तो रुक जाओ, तब तक collision phase से वो बाहर ना हो जाए. After a collision device wait for random back-off period before re-attempting the transmission जो भी हमारा डेटा होगा. So CSCD was like collision detection was designed for a wire Ethernet network, but it is a large obsolete today in the modern Ethernet networks. Use with or switches instead helps eliminate collision, right? तो फिर हम डायरेक्टली कर देते हैं and overcome कर देते हैं उसको, right? Collision अवॉइडेंस, राइट? यहाँ पे हम collision को अवॉइड कर देते हैं, फूटने से पहले ही अवॉइड कर देते हैं. ऊपर कैसा हो रहा था फिर रुक रहे थे हम. यहाँ पे collision avoidance is a wireless network where a collision detection is challenging due to nature of a wireless transmission की वजह से हो रहा है. The device using collision CSMA/CA, which is collision avoidance list
to the wireless channel before transmitting to check off activities. If the channel is busy, then defer their transmission. Additionally, CSMA employs a virtual carrier, some machine where the device notified other when they enter toward transmission and avoid collision. The device also use an acknowledgement frame to confirm successful data पहुंच गया वहाँ पे तुम्हें helping avoiding collision. Wireless network can to introduce some overheading due to this additional machine. तो फिर एक सम आता है जहाँ पे हमें और लोअर पे ही सम रहता है कि जहाँ पे हम ट्रांसमिशन टाइम फ्री एंड फॉर फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम वगैरह निकालते हैं तो राइट उसका फॉर्मूला क्या है टाइम फॉर फ्रेम ट्रांसमिशन इज फ्रेम साइज इन बिट अपॉन चैनल बैंडविड्थ राइट तो फिर हम निकालते हैं जितना भी रहेगा उसको बिट में कन्वर्ट करते हैं अगर फ्रेम साइज 200 बिट्स दिया तो 200 की बी पी एस में कन्वर्ट करते हैं तो फिर अपॉन ट्रांसमिशन टाइम कर देते हो एंड देन फिर जो भी अपना टी मिलता है विच इज ट्रांसमिशन टाइम 0.00 मिली सेकेंड एंड देन फिर उसे हम चुपचाप से निकाल लेते हैं राइट तो फिर ऐसे सब सारे सम्स वगैरह हम प्रीफर करते हैं करना ऑन इट इजी एज वेल एंड एक और एग्जाम है यहाँ पे यहाँ पर हमें 1000 फ्रेम दिया 500 फ्रेम दिया पर सेकेंड एंड 200 फ्रेम दिया पर सेकेंड तो when started हुआ अपन देखते हैं जी का वैल्यू और वन मैक्सिमम थ्रूपुट which is 0.368 होता है एंड ये तो मैंने पिछले बार लाइक एग्जाम पे टाइम थोड़ा सा याद कर लिया था this time we will not do that. What are the difference between IPv4 and IPv6 ये बहुत अच्छा है IPv4 में अपन 32 बिट यूज कर सकते हैं IPv6 में कितना 128 बिट यूज कर सकते हैं एंड इट इज सेपरेटेड बाय डॉट इट इज सेपरेटेड बाय semicolon and it is denoted by decimal number it is denoted by hexadecimal number और इसमें जो हेड साइज होता है 20 से लेकर 60 बिट में वैरी करता है हेड लेंथ जो भी होगा इसमें हेड लेंथ फिक्स रहता है at 40 and right so ये काफी मस्त है ये भी काफी मस्त है कर सकते हैं काफी इजीली लिख सकते हैं more complex with a variable field similar रहता है अपना IPv6 और IPv4 में हमारा सिक्योरिटी इतना नहीं रहता है IPv6 में सिक्योरिटी इनबिल्ड होता है एंड सिक्योरिटी लैक बिल्ट इन सिक्योरिटी फेलियर होता है सिक्योरिटी फेलियर मैंने जैसे बताया कि वो उसमें इनबिल्ड होता है कॉन्फ़िग मैनुअली DHCP और डायनेमिक यूज कर सकते हैं DHCP v6 स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्राइब द फुल IPv4 ये मैंने आपको बताया काफ़ी इजी है ये जिसमें इतना बहुत कुछ नहीं है देयर आर 4-5 क्लासेस ऑफ IPv4 which is A class A class B class C class D and class E right so class A में क्या होता है हमारा 1 से 0 से लेके 126 and 127 को कंसिडर नहीं करते हैं क्लास B में 128 से लेके हमारा 191 तक होता है एंड क्लास सी में 192 से लेके 223 तक होता है क्लास डी में 224 से लेके 240 तक होता है राइट आई एम राइट लेट्स सी या 239 होता है 239 होता है एंड फिर क्लास ई में हम 240 से लेकर 254 तक वो करते हैं तो बेसिकली हमारा जो क्लास ए एंड बी एंड सी होता है ये मोस्टली हम कंसिडर करते हैं कि ये 32 बिट का होता है एंड यहाँ पे फर्स्ट क्लास में हमारा 8 बिट हम नेटवर्क आइडेंटिफायर
8 bit is used for network identification and 24 leaves for the host addressing. And इसमें second वाले में क्या होता है कि हम 16 bit for network addressing and 16 bit for host addressing. एंड थर्ड वाले में हम 24 बिट हम नेटवर्क एड्रेसिंग में यूज कर सकते हैं एंड 8 बिट फॉर होस्ट. Suitable and class A suitable for a number of a very large network के लिए suitable. छोटा है but large network के लिए चल जाता है. And class A addressing is identified by leading a 0 bit in a first. अपन उसे पहचान कर सकते हो 0 bit का है तो 0 से बाइनरी में डिनोट हुआ तो हमें पता चलता है कि वो क्लास ए का है. एंड सुटेबल क्लास बी क्या है सुटेबल फॉर अ मॉडरेट नंबरिंग एंड मिनिमम साइज नेटवर्क के लिए हम कर लेते हैं. एंड इसमें कैसे डिटेक्ट करेंगे कि 0 1 0 दिखा तो 1 0 का अगर 2 होता है ना तो ये इससे दिखा तो हमें पता चल जाएगा कि वो अपना अगर फर्स्ट ऑपरेट में 1 0 दिखा तो हम पता कर लेना है कि ये क्लास बी का. क्लास सी में 1 1 0 आएगा तो 1 1 क्या होता है बाइनरी 3 होता है ना तो क्लास बी राइट. क्लास सी suitable for a large number of small network. क्लास डी क्या होता है क्लास डी में reverse for the multicasting group address used for one to many and many to many communication. क्लास डी हमारा ये करता है. क्लास ई क्या करता है हमारा रिवर्स फॉर एक्सपेरिमेंटल लाइक रिसर्च पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. नॉट कॉमनली यूज इन ज़्यादा यूज नहीं करते हो सब. और इस चैनल एलोकेशन प्रॉब्लम ये होता है कि जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर चैनल को डिवाइड कर देते हैं एन एन नंबर ऑफ टर्म्स में जहाँ पे और फिर हर एक नंबर ऑफ टर्म इज हम एक यूजर को असाइन कर देते हैं उसका हर एक सेगमेंट राइट. तो फिर चैनल एलोकेशन प्रॉब्लम द फंडामेंटल इशू द कम्युनिकेशन सिस्टम दैट गोल इज टू एफिशिएंटली एलोकेटेड कम्युनिकेटिंग चैनल टू ईच एंड एवरीवन. तो फिर ये होता है. तो फिर चैनल एलोकेशन प्रॉब्लम के अंदर भी दो टाइप होते हैं. एक अपना स्टैटिक चैनल एलोकेशन होता है एक अपना डायनामिक चैनल एलोकेशन होता है. तो स्टैटिक चैनल एलोकेशन में क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर चैनल को ना मल्टीपल नंबर ऑफ टर्म्स में डिवाइड करके लाइक मैंने कहीं पर लिखा भी है लेट मी शो यू where I was learning about it. Just give me a second. So channel allocation is a process in which one network channel is divided into a multiple user in order to carry a specific task. If there are n number of user and channel is divided into n equal size, सब चैनल में डिवाइड कर देते हैं एंड सब हर एक पर्टिकुलर सबको वो मिल जाए. तो channel allocation problem is divided into two parts. So the static channel allocation, dynamic channel allocation. Static channel allocation में क्या होता है FDM होता है frequency division multi डिवाइड हो जाता है. तो a single channel allocation is divided among इसमें static में क्या होता है single channel allocation is divided among a multiple computer user using FDM like हर एक को अलग अलग frequency division होता है. Since each user has provided a particular and private frequency base, so there is no interface between the user. हाँ तो फिर वो ओवरलैप नहीं होता. If there are n users, the band width is divided into n equal size portion so that each user assigns n one portion. Dynamic channel allocation में store model single channel allocation assumption collision assumption
इसकी फोन और लैप टाइम फोन पता चल जाता है कि चैनल लोकेशन गड़बड़ है यहाँ पे। फिर हम सम देखते हैं कि वो उसका एल्जेब्रिक फंक्शन वाला सम आ जाता है। एंड देन फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हमारा लैम का आंसर दे दिया हमने। अब बहुत भी देख लिया है वो डिस्काउंटेड हुआ। डायग्राम भी बना देंगे उसका। मैथ वीक को आते हैं अभी थोड़ा सा बड़ी इसमें particular PDF in which we are studying about it, right? So here we are, and definitely we will begin with this part, which is your TCP and UDP. Difference between TCP and UDP. TCP थोड़ा सा रिलायबल है, UDP से ज़्यादा अहम है। ये पॉइंट हम थोड़ा सा नोट होते हुए नीचे चलते हैं। एंड एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट इज प्रेजेंट होता है और यूडीपी में एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। एंड टीसीपी में इट इज कंपेरेटिवली स्लो देन यूडीपी एंड यूडीपी इज फास्ट। क्यों फास्ट होता है? क्योंकि उसमें कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होता। एंड टीसीपी हैज वेरियस हेडर लेंथ विच इज 20 से लेके 60 में वेरीज करता है। एंड यूडीपी में फिक्स होता है, ये याद रखना, बिल्कुल याद रखना, 8 बिट बाइट्स फिक्स्ड होता है हेडर लेंथ। टीसीपी इज वेरी highly weight heavy weight and UDP is very lightweight and using handshake such as अपना थोड़े थोड़े SYN ACK and SYN ACK like दोनों का combination. It is a connection-less protocol, so no handshake is present. TCP doesn't support broadcasting. Broadcasting मतलब एक साथ बहुत सारे लोगों को दे दो, and UDP supports broadcasting. TCP doesn't support broadcasting, and UDP supports broadcasting. TCP का फिर एग्जाम्पल आप दे देंगे HTTP, HTTPS, FTP, SMTP एंड टेलनेट। UDP में आता है जब वहाँ पे हम रियल टाइम वो करते हैं ना, रिप हो गया, RIP, DHCP हो गया, DNS हो गया एंड TFTP हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम रियल टाइम में खेलते हैं ना, जैसे कि गेमिंग हो गया, गेमिंग में रियल टाइम अपडेट्स करना पड़ता है, तो वहाँ पे हमें पता है कि वो कैसे होता है, राइट? व्हाट इज NAT? NAT is something and one of the most amazing thing हमें पता है। स्टार्टिंग का तो मैं आपको इतना ज़्यादा बताऊंगा नहीं कि हमें पता है वो पब्लिक टू प्राइवेट करता है, प्राइवेट टू पब्लिक करता है। बेसिक NAT which is also known as static NAT and dynamic NAT। तो बेसिक NAT में क्या होता है, इट इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ NAT मैप्स a private IP address to a public IP address में मैप करता है। प्राइवेट IP address are used within a local network और लाइक फोन वगैरह कहीं पर भी आप यूज कर सकते हो बिजनेस वगैरह में नेटवर्क के लिए अपने। एंड पब्लिक आईपी एड्रेस इज यूज्ड फॉर ग्लोबल इंटरनेट, राइट? तो हमें पता प्राइवेट हम अपने पर्टिकुलर लोकल के लिए यूज कर सकते हैं एंड पब्लिक जो भी एड्रेस होता है वो इंटरनेशनल लेवल पे यूज कर सकते हैं या फिर ग्लोबल लेवल पे यूज कर सकते हैं। स्टैटिक NAT also known as one-to-one NAT assigns a fixed public IP address to a specific device on the local network. This allows each external device to interact to connection between a specific stuff and well or dynamic NAT अपना क्या होता है, dynamic NAT allows multiple devices in a local network to share तो फिर अपना public और अपना private public address when an internal device required access to internet NAT device are assigned an available public address from a pool. The mapping is temporary and it relates when the connection is closed। तो उसको पता चल जाता है। तो इतना था ना बिल्कुल ऑप्शन what is routing? What are the desirable characteristics of routing algorithm? So routing is a fundamental concept in computer network that refers to the process of determining the path that data packet should follow
to reach to a desire or the destination in the network. तो routing क्या है हमारा fundamental concept in a computer network के अंदर जहाँ पे हम देखते हैं it determines the path of a particular package या हमारा कुछ भी data वगैरह जा रहा है वो डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचेगा तो वो राउटिंग वो करता है इट इन्वॉल्व सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट फास्ट होना चाहिए डेटा ट्रांसमिट होना चाहिए बेस्ड ऑन द नेटवर्क टोपोलॉजी द अवेलेबल पाथ एंड वेरियस राउटिंग एल्गोरिथम routing is essential for proper functions of any network where the data needs to be exchanged between devices, right? So describe characteristic of routing algorithm. The very first thing is like correctness and simplicity. So correctness, a correct routing algorithm ensures that data packets are delivered to their intended and accurately to the without error बिना error के पहुंच जाना simplicity क्या होता है a routing algorithm should be designed with the simplicity in mind a complex algorithm can be lead to another difficult like in the long run नहीं कर सकते robustness है robustness like second point robustness है robustness is a critical property that ensures the network can continue to deliver any packet even in the presence of failure. This includes like a failure, this include link failure, routing failure और other changes in the network as well. तो यहाँ पे फेल भी हो जाएगा तो भी आपका डेटा पहुंच जाएगा. A robust routing algorithm should quickly adapt to this change and find alternative path to reach to the destination. Scalable है, scalable क्यों है? It defines to it has the ability to routing algorithm to convey to a stable state quickly network and जो भी अपना adherence रहता है when network connection change such as like failure of topology change routing algorithm and should adapt the new equilibrium, the routing, and those are with faithness and optimality. So faithness क्या होता है routing algorithm should be assurable that the network resources are allocated fairly among the different users of applications and use कर सकते हैं. Optimality की वजह से the router algorithm should be strive to find out the best path optimize, right? And the data transmission based on the predefined threat matrix. It may involve the minimize and the maximize bandwidth using all this kind of object. Efficient काफी ability to routing algorithm to make router decision with a minimal control overhead. In other words, the routing algorithm should be not uh, generate exclusive routing message or yes or that. Explain the next question that they have explain the distance vector routing algorithm or to which DVR बोलता है the suitable example है then तो हम देख होते हैं यहाँ पे भी यही होता है कि अगर DVS क्या करता है समझो 5 पॉइंट है 5 पॉइंट से अभी हम एक टेबल बनाते हैं तो वो टेबल क्या करता है अपने नेबर से शेयर करता है डिस्टेंस ऑफ द राउटिंग एल्गोरिथम द टाइप ऑफ राउटिंग एल्गोरिथम यूज्ड इन अ कंप्यूटर नेटवर्क टू डिटरमाइन द बेस्ट पाथ फॉर अ डेटा पैकेट्स टू रीच their destination. It operates by sharing routing information with neighbors routing and calculate the distance typically measures in a route number of hoops to different destination in the network. One of the most well-known distance vector routing algorithms is RIP. How DVR protocols work.
DVR, each router maintains a routing table. It contains only one entry fact each router. It contains two parts, a performed outgoing line to use for the decisions and estimate the time delay, time of updating, and the information we are able नोड का जो भी रहता हम अपडेट कर लेते हैं फटाक से ईथ राउटिंग नोड द राइट अपडेट करता है बात करते हुए एनहांस करता है routing periodical exchange routing table with the each of the neighbor. It compares the delay in its local table with the delay in neighbor table and cost for reaching that neighbor. तो फिर हम उसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल देते हैं एग्जांपल के थ्रू में लाइक यहाँ पे 3 नोड बनाएंगे जहाँ पे अभी एक करके अपडेट करते करते रहना पड़ेगा फिर देन हम लोग को वो सबको ऐड कर देंगे हम नथिंग इज मोर यू कैन से इम्पोर्टेंट इन दैट बस इजी होता है फिर हम उसे अपडेट भी करते हैं राइट what is sliding window put away? So just give me a particular 5 minutes and I will be come back within a second. And we have just completed this next 30 minute as well. So let's restart this.
Oh, but it was so good. Here and right, what is sliding window protocol? एंड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल क्या होता है कि यहाँ पर हमें बेसिकली क्या करना होता है कि एक पैकेट के अंदर लाइक जो भी पर्टिकुलर विंडो रहता है उसके अंदर हम कितना पैकेट ट्रांसफर कर सकते हैं राइट तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल इज अ टेक्निक फॉर सेंडिंग अ मल्टीपल फ्रेम्स एट अ टाइम it controls the data packet between the two devices where deliver the data frame is needed. It is also used in TCP, transmission control protocol. In the technique, in this technique, each frame has sent from a sequence number देके भेजते हैं हम the sequence इसका मेन काम क्या होता है पता है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का जो भी हम पैकेट्स वगैरह भेजते हैं ना वो ज्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए या फिर ज्यादा एरर नहीं होना चाहिए लाइक जो भी पर्टिकुलर वे में जा रहा है सीक्वेंस वही सीक्वेंस में पहुंचना चाहिए राइट तो यही बोल रहा है ये पॉइंट इट इज अ टेक्निक वेयर फ्रेम हैज सेंट इन अ सीक्वेंस नंबर एंड सीक्वेंस नंबर असाइन कर देते हैं राइट जब भी मिसिंग होता है फिर हम उसे ढूंढ लेते हैं आराम से जो भी पैकेट गायब हुआ तो फिर the purpose of sending sliding window protocol technique is used to avoid duplication of data so it use for the sequential number right डुप्लीकेसी नहीं चाहिए हमें एक चीज दो बार नहीं पहुंचनी चाहिए तो फिर अभी हमने पढ़ाई की थी लाइक व्हाट इज गो बैक एंड एनक्यूआर एंड व्हाट इज सिलेक्टेड रिपीटेड ARQ तो फिर वी कैन जस्ट गो एंड रिफ्लेक्ट connected that as well so your what is this like connectionless and connection oriented तो connectionless में हमने अभी आपको बता देता है कि connection oriented it is flexible feasible not feasible let me search it somewhere. Like most of the time, it follows the TCP and UDP as well, like connection less and connection oriented. So everything we have done here, NAT and all, routing, describe that TVS, SMTP. We have to do SMTP. We have to do DHCP. We have to do DNS. And right, coming towards the what I would do this is also known architecture as well. So let's see like what are the difference. सो करेक्शन ओरिएंटेड सर्विस एंड कनेक्शन लेस सर्विस हम देखते हैं यहाँ पे सर्विस इज रिलेटेड टू टेलीफोन सिस्टम इसमें अपन रिलेटेड टू पोर्टल connection oriented service is necessary connectionless service is not compulsory so connection oriented service is feasible here connection-less service is also not feasible that much so in connection oriented service
Conjunctions is not possible. In connectionless way, conjunctions is possible. Connection-oriented service gives the guaranteed reliability, and connectionless does not give us the guarantee of reliability. In connection, order service packet follows the same route. In connectionless में packet does not follow the same route. और फिर इसमें एग्जांपल टीसीपी हो जाता है, इसमें एग्जांपल यूडीपी हो जाता है. कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस रिक्वायर्ड बैंडविड्थ ऑफ अ हायर रेंज. कनेक्शन लेस में बैंडविड्थ विल बी लोअर रेंज में भी चल जाता है. एंड द लास्ट पॉइंट इज अबाउट लाइक कनेक्शन ओरिएंटेड रिक्वायर्ड ऑथेंटिकेशन एंड कनेक्शन लेस में इतना ज़्यादा हमें ऑथेंटिकेशन का जरूरत नहीं होता है. राइट. ओके. सो या देन व्हाट इज एसएमटीपी? SMCP stands for standard like simple mail transfer protocol. So here what it happens like whenever you send your mail to anyone, whenever you send your any message to anyone. So this is the time what you can actually do. So let's see. SMTP is a set of communication guidelines that allow software to transmit an electronical mail over the internet is called as SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. It is a program used for sending message to other computer user based on email address. It provides a mail exchange between user on the same or a different computer, and it also supports what other things it can support. It can send a single message to one or more computer or device as well. Sending message can include text, voice, video, and whatever else your hyperlink or hypertext as well. It can also send a message on a network outside the internet as well. So this is the main thing which you can see it here. The main purpose of SMTP is used to set up communication tool between servers, right? And, all this kind of thing. So use of terminal user agent and send mail query to the message translator agent and the TCP as well. So yeah, we are going to see like this is a basic diagram like once you have to understand. So and this is the easy part. What is DHCP? And the DHCP is one of the most frequently asked questions. So it is dynamic positioning configuration protocol. So what it does, right? Let's go, buddy. It is used for a dynamical. What? Let me tell you like what is the overall thing of DHCP. Like what it does, like it provides an IP address to any new device it enters into your network. So first it checks like does it have any IP available, or then it assigns that IP available to the next device which has been currently entered. तो हम उसे IP एड्रेस असाइन कर देते हैं एंड फिर वो पूरा सा कर देता है. DHCP stands for Dynamic Hosting Configuration Protocol, and it is used for dynamic access and IP address to the device or node in the network
So that the communication using IP internet protocol. DHCP automates and centralized manage this configuration. There is no beat to manual assign manually assign नहीं करते अब हम automatically हो जाता है. Therefore, there is no requirement for any user configuration to connect to DHCP based network. DHCP can be implemented on local network as well as a large network के लिए भी use कर सकते हो. DHCP is a default protocol used by most routers and network equipment. So DHCP is also known as RFC, like request for command. And everybody will know like what is file transfer protocol, which is like definitely we're going to see what is DNS and FTP. DNS stands for domain name system, where your domain name, like you know, like do you always connect about like okay Google, we have a simple domain URL, and not every website you're going to understand what are the URLs are. So DNS is directly directly connect to mapping the between of a name and a host address as well as the URL. Connect the URL or IP of a particular website to the name. So whenever you are just typing the name of the particular website, you can directly connect on the internet through IP, right? So it is required for functionality of internet as well. What is FTP? FTP stands for File Transfer Protocol. FTP is a standard internet protocol provided by TCP and IP using for transmission of a file from one host to another host. It is mainly used for transforming the web page files from their, you can say, creator or a computer that acts as a service of the other computer on the internet. So here it's a very beautiful thing, which is HTTP and Telnet. HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. It is a protocol used to access data from a World Wide Web. HTTP can be used to transfer the data in the form of plain text, hypertext, audio, videos, and so on. And the fourth point is like this protocol is known as hypertext transfer protocol because it the efficient that allows us to use the hypertext environment where there are rapid jump from one document to another document, right? That is why this is called a hypertext transfer protocol, because it efficiently that allows us to use hypertext environment where data can be jumped from one document to another document. HTTP is similar to FTP as it is also transfer the files from one host to another host, but HTTP is simpler than FTP because it uses only one network, one connections, and that's it. What is Telnet? Telnet, the main task of Telnet is to provide a service to user. For example, the user wants to run a different application program on a remote site and transfer the result to a local site. This requires a client-server program such as FTP and SMTP, but this would not allow you to create a specific program for each demand, right? So the better solution is to provide a general client service program that let the user access the application program on a remote computer. Therefore, a program that allows the user to log on a remote computer. A popular client server program Telnet is used to meet such demand. Telnet is Telnet provides a connection between a remote computer in such a way that the local terminal appends to be a remote site. तो फिर जो हम एक्चुअली में जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ वो कैसा दिखेगा मुझे,
कि जो वहाँ पे यूज़ हो रहा है, राइट? एकदम सेम टू सेम लगेगा कि मैं फ्रॉम हियर आई कैन कंट्रोल दैट पर्टिकुलर कंप्यूटर एज वेल। तो एक पासवर्ड जनरेट होता है, पासवर्ड जनरेट होता है प्लेन टेक्स्ट में होता है, प्लेन टेक्स्ट में होता है, इसकी वजह से वो इतना सिक्योर नहीं होता है, लाइक एनी थर्ड पर्सन कैन गेट योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो दैट्स हाउ यू कैन लॉग इन योर particular stuff. But is and this is one of a good and special answer for me. What is Cisco Sona architecture? Cisco Sona architecture, right? Cisco service oriented network architecture. Service oriented network architecture is a comparable architecture framework developed by Cisco system to assign uh, in building any deploying scalable, adapting and service adapt and service oriented network. Okay, let me do once again. Like Cisco architecture is a service oriented architecture is a comparatively compressive architecture framework developed by Cisco system to assign organization in building and deploying systems adaptive and service oriented network infrastructure. SONA aims to align network service and resource with the dynamic demands of business application and service. There is an elaboration of what are the things that actually happens. So the very first step is like SOA, like service oriented architecture. SONA leverage the principle of SOA, which involve designing application as module and reusable thing that can be accessed over the network. It promotes flexibility and aid in demanding network new service, right? Network infrastructure layer. This layer forms a foundation. This layer forms a foundation of a SONA. SONA includes network implementations such as router, switches, firewall, and other where devices. SONA emphasizes the need for robust, scalable, and highly available network infrastructure. Application layer as well. At application layer, SONA force on integrating and optimizing application and service. This involves leveraging technologies like application acceleration and load balancing and content delivery to enhance application performance and user experience को हम स्केल करते थोड़ा सा. Security layer in a secure expected SONA, it includes a measure such as firewall, फिर हमारा equivalent VPN software to safeguarded the network infrastructure and protect the sensitive data as well. Management and control layer provides tools and a solution for network management, monitoring and controls. It includes a network management system, NMS. Okay, NMIMS, something special. Okay, nothing. Policy-based management and architecture tools to automated network provision and configurations as well. Application service layer. This layer deliver additional service required for application to foundation optimals such as changing
distribution and quality of services, QoS, quality of services, machine to ensure efficient data delivery. Integration layer has also emphasizes the importance of integration with other enterprise system and protocol. And how many layers are there? Collaborative layer, collaboration layer, mobility layer, visualization layer, unified command option, adaptive network services. Still we have to do SDN architecture and explain the architecture along with that. What is SDN? SDN stands for software defined network, which is a network architecture approach. It enables the controller to manage of network using a software application. Through software defined network, SDN network wave of the entire network and its devices are programmed in a central control manner through a software application using API. SDN architecture. What is SDN architecture? Basically is okay, so this is the three layers at present. So हम इसमें यहाँ पे switches हैं वो सब यूज़ कर सकते हैं. Let me go through with that. So in the traditional network, each switch has its own data plane and control plane. So the control plane क्या करता है? Of a various switches exchange topology information and hence construct a forwarding table that decides where this incoming data packet has to be forwarded to the data plane, like कहाँ से data packet आ रहा है, कहाँ पे भेजना है. Software defined network (SDN) is an approach by which we take a control plane away from a switch and assign it to a centralized unit called SDN. यहाँ पर निकाल देते हैं. Hence, the network administrator can shape traffic via the centralized console without having to touch the individual switch. The data plane still resists in the switch, and when the packet enters a switch, the forwarding activities activate the indecent based on the entire of a flow table, which are pre-assigned by the controller. 6 point is the flow table consists of match files like input and other instructions. The packet is first matched with a match field on the flow entries. Then the instructions of the corresponding flow entries are executed. The instruction can be forwarding the packet via the multiple protocol, dropping the packet or adding headers to the packet. If the packet doesn't find a corresponding match in the flow table, the switch queries the controller, which sends a new flow entries to the switch. The switch flows or drop the packet based on the flow entry. So this is the basically application layer, and then next we have a control layer, and then infrastructure layer, and that is actual switches and everything is present. Explain in brief what is PPDIOO network methodology.
So, Cisco PPDIOO network design methodology is structural approach used to design and implement a network solution. PPDIOO stands for prepare, plan, design, implement, operate, and optimize. Right? This means of this. So yeah, we are very close to that, and still we have to understand about this kind of thing in which we can able to understand, right? So the very first thing, like, we are going to study about it's a framework that helps the organization to ensure the network are well designed, scalable, and reliable as well. So in very first of what we does, we prepare. In this phase, you establish the business and technical requirement for the network. You identify the goal and objects of the network, and understand the existing infrastructure, and gathering the information about the organization need, and the playing right. So in plan, what you are going to do, we are going to plan the phase involved in the creation of a high level structural for the network. This includes different defining the scope and the timeline of a particular objective, so the performance and the risk assessment to identify the protocol challenges. Design. This phase is all about creating a detailed network design that meets the requirements established in the previous phase. You will design the network. Architecture includes the hardware, software, prototype, and protocols and security resolutions. It's crucial to consider the scalability and other thing. Implementation of Java and actually implement करेंगे where your physical setup and the configuration of a network according to the design, and this is a phase where involve installing and configuring the necessary hardware and software components. Testing and validating are also on this part of this particular phase, like implementation of check करते हैं. Operate. After the network is implemented, you move into the operational phase. This involves managing and maintaining the network on an ongoing basis. It includes monitoring network performance, troubleshooting issues, and ensuring that it meets the organization optimum requirement as well. लास्ट वन ऑप्टिमाइज करते, लाइक स्केल करने पे जाते हैं. कंटिन्यू एंड इम्प्रूव, मेकिंग इम्प्रूवमेंट टू द नेटवर्क to enable performance, security, and efficiently regardlessly सब कुछ होता था फिर बस that's it. Open flow message is a protocol that enables the communication and controls of network devices such as switch and router in software-defined network ATM. Open flow messages are the fundamental unit of communication between SDN network and network devices. This message allows controller to program message, manage the controller, and behave of the network devices dynamically. Hence, are some of the key open flow messages. So maybe
think that's it for today. And we'll definitely come up with some other thing as well yesterday as well. Like tomorrow, have our exams, so prepare for it. Yes, sir. And you're going to do well. Right. So yeah. Will you come back? That's it. Thank you.